Hey, hi everyone. Welcome back to Abbylucius. I know ये मेरी शायद पहली वीडियो होगी after a month जब देखोगे. So I thought to give you guys a reasoning कि मैं एक month से available क्यों नहीं था. Let me just set my board over here. 1 second. Okay, sorry for that. So इसके बाद आने वाली आप सारी वीडियोस देखना please. They're gonna be really good. और फिलहाल the reason why I was not there from the last 1 month, after Goa I came back home and everything went good. Or sometime in last 20 days my dadi was hospitalized. Doctors ने बताया था उनको clot है and surviving chances negligible थे. It was less than 1%. So I was all tied up with hospital and home and everything, and sadly we lost her on November 9th. उसके बाद it impacted a lot of everyone in the family emotionally, mentally, because if I talk about myself, I stayed with her for good 30 years of my life, and धीरे धीरे करके हम लोग आज की लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं कि हमें सब चीज़ें प्रैक्टिकली ही दिखती हैं. बट अगर आप कुछ भी सोचो, थोड़ी बहुत चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं आप कहीं ना. तो जो भी हुआ, मे बी फॉर द गुड, मे बी फॉर द बैड, बट मे गॉड रेस्ट हर सोल इन पीस. एंड आज के बाद I'll make sure I'll be more consistent. और the reason I'm sharing this with you guys because कहीं ना कहीं it's a small family which I am trying to make on this platform as well. So you guys should know what's going on. बाकी अभी के लिए I'm currently out with Piyush, who's my childhood friend, who's my brother, and my cousin Shalom. We are on a trip because Piyush दुबई से आया है 2 साल के बाद, तो हम उसके साथ थोड़ा बाहर आए हैं. आप आने वाली वीडियोस देखना, वो ट्रिप की पूरी वीडियोस होंगी, पूरी इनलाज के हिमाचल में कहाँ कहाँ गए हैं. एंड आई होप यू गाइज विल लाइक इट. एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग. तब तक के लिए दिस इज Abbylucius साइनिंग ऑफ. बाय.